questions. Of course, I'll be asking few questions from her, but we'll see if we can open it up for you as well. Yeah? So have you watched her any of the series? Any series? Okay, great. So we'll just watch a video for 3 minutes and after that we'll start. Okay? Great. Slow cycling will make family life happy. Hello everyone. So we are back again. I am back again. And just a little bit about myself. I am Kritika and I am from Ayodhya. I am a heartfulness trainer and I love writing poetry, songs, work into a development sector, into education, and quite a lot work with youth. So that's about me. I currently live in Delhi, but I have a background into engineering. Today, I'm very, very excited. Actually, I'm excited for the last 1 week, I guess, because of an opportunity to interact with someone whose acting I just loved. मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने उनकी एक सीरीज देखी थी अ सूटेबल बॉय. कितने लोगों ने देखी है? ओह वाओ, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज जाके देख लेना. और तब से मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, उनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई हूँ. And I had actually binged 6 episodes on Netflix back to back
and then had written a post on Instagram about what my learnings were from that web series, A Suitable Boy. All right. So without any further ado, I would like to invite Tanya. Hello, hello. Thank you so much. Thank you for the So- very kind introduction. नहीं अभी introduction हुआ नहीं है. अरे अभी और Yeah. है. So Tanya Maniktala was born and brought up in Delhi. Tanya is a prolific actor and she has appeared in some notable shows on many OTT platforms and has an upcoming movie as well. She gained many accolades for her endearing portrayal of protagonist Lata Mehra in the BBC Studios and Netflix production A Suitable Boy, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी. She is one of the 10 honorees of BAFTA Breakthrough India, and today I'm in conversation with her for this particular session. You can call it Chai Pe Charcha, you can call it Tete Tete, you can call it Heart to Heart, I don't know what, but let's sit. Yes. Hi, how is everybody doing? Guys, एक request है. I know सबको लोग record करना चाह रहे हैं, but I would really appreciate if we can put our phones down and just maybe be present here. क्योंकि recording तो आप लोग को मिल जाएगी फिर से, ठीक है? तो let's engage one on one, ठीक है? Thank you. So, how's the Josh? Hi, आवाज नहीं आ रही है? Hi, very high. Oh God, बहुत ज़्यादा है जोश आपके लिए. कितने लोगों ने तान्या के साथ सेल्फी खिंचा ली अभी तक? Oh my God. मैं देख रही हूँ कल से तान्या को पकड़ पकड़ के सेल्फी खिंचा रहे हैं और मैंने भी खिंचाई ऑफ कोर्स, बट ठीक है, इसके बाद आपको मिले. एंड तान्या हैज बीन सो काइंड एंड हम्बल कि वो सबको चांस देती है, मौका देती हैं खींचने खिंचाने का. सो लेट्स बिगिन विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड एंड देन वील ओपन इट अप फॉर यू एज वेल. तो पहला सवाल है आपके लिए कि यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. क्या आपने पढ़ाई करी कॉलेज में एंड हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इनटू एक्टिंग? Okay, so yes, I was born and brought up in Delhi. Delhi University से पढ़ाई की है मैंने, English literature पढ़ा है. And how did acting happen? Actually, that's very accidental because मेरा कभी शौक नहीं था. So I grew up in a joint family. मेरे 3 भाई बहन हैं. तो जो बाकी तीनों हैं, they were very extroverted. मतलब हमेशा उनको कुछ ना कुछ लगे रहते थे स्कूल की एक्टिविटीज़ में. And I was always the shyer one, जो बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती थी और बस किताबों में लगी रहती थी. एंड बट इट्स अ गिवन कि बाकी 3 कर रहे हैं तो चौथी भी करेगी, तो ढकेल दिया जाता था मुझे भी हर एक्टिविटी में. एंड माई सिस्टर एक्चुअली वॉज वेरी इंटरेस्टेड in Bollywood, in dramatics and all of it. So she also pursued theatre when she was in her college, and she had heard very good things about theatre, the theatre society of my college. So that's how I actually chanced upon acting, and बस फिर मज़ा आने लगा, खुशी मिलने लगी उससे कुछ and that's how acting happened. तो कितने लोग यहाँ पे एक्टिंग में जाना चाहते हैं? ओके, few. सो बेसिकली एक्टिंग जैसी फील्ड या कोई भी क्रिएटिव फील्ड एक वॉलेटाइल फील्ड होती है एंड यू नेवर नो कि उसमें कितने आपके चांसेस होंगे. एंड दो वी वांट टू गो इनटू अ सर्टेन फील्ड, लेकिन सिक्योर ऑप्शंस दिखते हैं कुछ और हम उनकी तरफ चले जाते हैं. सो हाउ डिड यू गेट दैट कन्विक्शन कि मेरे को तो यही परस्यू करना है? ओके, सो जैसा आपने कहा, मैं भी स्टेबल ऑप्शन के पीछे भाग रही थी. सो आफ्टर आई डिड फ्लेम्स, आई डोंट नो अगर आप लोग को पता है, सो बिफोर अ सूटेबल बॉय आई डिड अ वेब सीरीज कॉल्ड फ्लेम्स विच वॉज विद टाइम लाइनर्स. वहाँ पे मुझे दिख रहा है जी. सो आफ्टर दैट आई वॉज लाइक कि एक्टिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी. मुझे बहुत डर लगता है यार कैमरा के आगे, और अब देखो कहाँ आ गई हूँ मैं. पर या मतलब डर लगता था, अभी भी लगता है, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. नो, इट्स अबाउट फेसिंग योर फियर्स. हम लोग भागते हैं जिन चीज़ों से हमें डर लगता है क्योंकि इट्स वेरी ईजी, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्रस्ट योर सेल्फ कि यू नो व्हाट, इट्स ओके, इवन इफ आई फेल आई एम गोइंग टू ट्राई. सो दैट इज़ व्हाट इट वाज फॉर मी. एंड कन्विक्शन अभी भी लग रही है. And मैं copywriter, after Flames, I actually became a copywriter, and I was going for my higher studies to Melbourne. And one of my batchmates from my theatre circuit, एक था, वो he became a casting agent, and he asked me to audition for something.
सो मैं बहुत थक हार के अपने ऑफिस से जब मैं कॉपी राइटिंग कर रही थी, आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड आई मेट द कास्टिंग एजेंट एंड ही वाज सो काइंड एंड ही कुड सी दैट हाउ टायर्ड आई वाज एंड आई वाज लाइक कि सर आई एम रियली अनप्रिपेयर्ड, can I please do it some other day? And he was very kind and he said, yeah, definitely I can see it. Let's do it another day. And he gave me another chance. So I didn't audition that day. I just met him, read the script, and फिर मैं फिर से गई उनके पास. I auditioned and फिर बस होती गई चीज़ें. So अभी भी I think I'm still finding that conviction. अभी बस ऐसा है कि अच्छा लग रहा है, कुछ महसूस कर पाती हूँ. I feel like I can connect with you guys through this thing that I do. And that is all I want. So that is it. And you didn't need to go to Bombay to pursue acting per se. No, I didn't. It happened in Delhi. So एक myth होता है बहुत बड़ा कि बॉम्बे जाएंगे तभी हम एक्टर बन सकते हैं. तान्या ने इस myth को ब्रेक किया है. So huge round of applause for her, please. ऐसा नहीं है, प्लीज. ऐसा है. ऐसा कोई क्रेडिट मत दो मुझे. बहुत सारे लोग हैं ऐसे, प्लीज. थोड़ा क्रेडिट कब थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे हम, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, ठीक है. तो जब हम आप एक्टिंग में आई और आपको नाम मिला, फेम मिली, नेम फेम मनी आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ समथिंग विच यू लव डूइंग, एंड जैसे आपने कहा कि वो दिल था तो बाय प्रोडक्ट्स मिलते रहे, कैसे आपने उन चीज़ों को अपने सर पे हावी नहीं होने दिया? जैसा आपने पहले कहा था कि ये बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हैं एंड दीज आर वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग्स. सो ये सब कुछ आता जाता रहेगा. अगर मैं इन्हीं पे रिलाई करने रह गई तो आई डोंट थिंक मेरे में कुछ भी बचेगा. बिकॉज इतनी अनस्टेबल चीज़ पे आप कैसे अपना सब कुछ दे सकते हो ना, कि आज है कल नहीं. पता नहीं आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, पर आप लोग बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए. हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने सुना है, हो सकता है किसी ने ना सुना हो अगली बार. और कितने सारे ऐसे लोग होते हैं यार यहाँ पे जो आ रहे हैं, सच एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, वो डूइंग सच ग्रेट वर्क इन ऑल ऑफ देयर फील्ड्स, एंड हम लोग काफ़ी बार नहीं सुन पाते हैं. बट दे डोंट स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, राइट? So it's about keeping at it. It's about doing what you want to do with all the passion that you have without caring about what it's going to give you back, because you can't rely on these things. And सर चढ़ने की तो बात ही क्या यार, I don't, मतलब पता नहीं, मुझे प्यार मिल रहा है, उसका क्या सर चढ़ाऊँ मैं. मतलब I'm very grateful for all the love that I'm getting and everybody who's sitting here. But I think it's all masters. I really, really do believe that he has been giving me, and I think it's time that I start giving back to the community now, because I have been very greedy. I've taken from him, but now I think I do want to give back. Absolutely. तो तान्या, ऐसा सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी आते रहते हैं, एंड आई एम श्योर अगर आपने कुछ फेलियर्स भी एक्सपीरियंस किए होंगे, तो कैसे आपने उनके साथ डील किया, उन फेलियर्स के साथ? Okay, so very honest story. Why I became a copywriter was क्योंकि फ्लेम्स के बाद मुझे लगा था, जैसे आपने कहा था, कि बहुत सब जानते होंगे यार, सबको सब पहचान जाएंगे, अब तो लाइन लग जाएगी मूवीज़ के. ऐसे कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. I kept auditioning. Nothing happened. And then it broke me. Like I was like, this is not meant for me. Why am I putting myself up for failure? Why am I putting myself out there for people to reject me? Because आसान नहीं होता है रिजेक्शन हैंडल कर पाना. एंड मैं कॉलेज से तब निकली थी. all of my friends were doing so well in their fields, and I was just there कि like I'm auditioning, maybe I'll get it, something will work out, but it didn't. And I ran away from it. I became a copywriter. I found a stable option, but वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था. मतलब था कि हाँ शायद यही करना है. लिखने का हमेशा से मुझे बहुत शौक था, पर मन नहीं लग रहा था, दिल को खुशी नहीं मिल रही थी. So again, I decided to run away. I decided to pursue my higher studies. I decided to apply for creative writing to Melbourne. And I was running away actually from all of it when Daaji has different plans for all of us. I think that's when my friend called me up and he said, ki, like, come into audition for something. And also there was before this and before, like after Flames and before Suitable Boy, there was a phase in my life where I wasn't doing so well mentally. All my siblings they had left, and I was very, very dependent on them emotionally, and just for my soul was with them. So when they left, something felt very hollow inside me, and health wise बहुत सारे issues होने लग गए, and I decided कि अब नहीं हो सकता यार ये सब कुछ, and decided to run away.
But I kept praying to Master that Master, whatever plans you have for me, just give me the strength कि मैं सह पाऊँ. मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि एंड ऑनेस्टली वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं मतलब उस फेज़ में थी लाइफ की जहाँ मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसके बाद कुछ अच्छा हो सकता है. बट मास्टर सच्ची आई एम सो ग्लैड कि आप लोग यहाँ पे हो, आप यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो बिकॉज ही रियली वर्क्स वंडर्स. ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो सब कुछ सॉर्ट कर देते हैं. हमें सिर्फ हमारी आज की चीज़ें दिखती हैं हमें और हम कल के बारे में सोचते रहते हैं और भागते रहते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा. बट ही हैज़ अ प्लान एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू. सो आई थिंक दैट इज़ all I had. I could meditate, I could pray to him, I could write emails to him and just maybe try to find my inner grounding within myself. That is what I did. And he came through. Absolutely. So the outer master actually gets you in touch with the inner master. So when did you start meditating and how did you get into this practice ki you have to kind of have a practice of it? So I grew up in a family of heartfulness practitioners. My grandparents used to practice heartfulness. So my earliest memories of Sahaj Marg of heartfulness are when I would go to the ashram as a kid and I would volunteer there for क्योंकि तब you couldn't meditate because we were too young. But we would volunteer in the kitchen. हम लोग बर्तन धो रहे होते थे. कभी हम लोग kids center में हम लोग volunteer कर रहे होते थे to make plays and do all of those things. So that's how I basically grew up with heartfulness all around me. My father is a very ardent follower of this mark. So that is how it happened for me. All right. तो आज के युवा की मेरे ख्याल से दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, करियर और रिलेशनशिप्स. डू यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू हैव करियर एज एन इश्यू और चैलेंज? क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने पैसे कमाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. और कितने लोग की रिलेशनशिप्स में हाथ खड़ा कर सकते हैं यार, मेरी भी है यार. बहुत कम लोग हैं आई गेस, बहुत कम लोग हैं. मुझे सीखना चाहिए फिर इनसे. हाँ एग्जैक्टली. सो करियर के बारे में तान्या से काफ़ी बातें कर ली. अब हम आएंगे थोड़ा सा इनकी जो वेब सीरीज़ है सूटेबल बॉय, एंड एज आई मेंशन मैंने बिंज किए थे 6 एपिसोड्स बैक टू बैक. और उसमें से जो निकल के आई थी चीज़, जो एक लर्निंग निकल के आई थी, वो ये थी कि किसी इंसान के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, बटरफ्लाइज हो रहे हैं स्टमक में, और एक दूसरा इंसान है जिसके साथ एक स्थिरता लग रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है. तो उन दोनों में से लता ने, यानी कि आपके कैरेक्टर ने, वो स्थिरता को चूज़ किया था. एंड आई ऑल्सो फाउंड माई सेल्फ इन लता अ लॉट इन दैट एंटायर मूवी. तो क्या आप इस चीज़ से अग्री करती हैं जो उस मूवी का मैसेज था सबसे पहले? तो एब्सोल्युटली. सो पोस्ट सूटेबल बॉय जब मैंने पढ़ी थी सूटेबल बॉय, तब मैं सोचती थी कि यार क्यों नहीं गई लता कबीर के साथ. अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे नहीं पता. सो दिस गर्ल हैज़ 3 suitors. उसके पास 3 options थे. द फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट लव that she falls in love with this guy who is a Muslim, but obviously college का वो पहला प्यार जैसा टाइप्स होता है ना, young puppy love. It was that. And then there was a second guy who was a poet who would write poetry for her and all these fantasies, and वो fantasy land में जीता था. And the third option was a very practical guy जो he was a cobbler, he was a shoemaker. जूते बनाता था. जूते बनाता था, करेक्ट. जूते बनाता था. And her mother, Lata's mother, wanted her to marry the third guy, but Lata wanted to be with the first one. उसने उसको बोला भी कि let's run away, let's elope and देखते हैं कि क्या होता है. But the guy at the time refused, and then later on he comes around and he's like, you know what, I'm in love with you and all of those things. But Lata was like, I've moved on. So अब जैसे होता है कि she felt butterflies with the first one because that was her first experience with love. It was new, it was strange, it was adventurous, it was exciting. But the third guy gave her a sense of calmness. There was a stillness, exactly. There was a grounding. He anchored her, and she chose the third option because it wasn't a practical option, because it wasn't the safe option. But because I think that is the option you go for in life. You should go for, I think, because I also really wondered about it. But I think वो excitement ना एक पल की होती है. It vanishes away.
what stays with you is that sense of belonging. If you don't belong to some place, एक वो restlessness रहती है ना कि यार आज है कल होगा कि नहीं होगा, वो disturbance, वो turbulence रहता है, वो क्यों चाहिए आपको, वो momentary होता है. उसके बाद आपको लगता है कि यार अगर you're seeking something new constantly, boring हो जाती हैं चीज़ें एक पल के बाद, and you're seeking for something new again. So find something that stills you. Find something that you feel like no matter what, I'm going to keep choosing this each and every day. Be it your career, be it your relationship, in everything that you do, you have to actively choose to love it. You have to actively choose to do it all over again. Sure, and as you mentioned with the first boy, though the character Lata was feeling a lot of butterflies and excitement, but she was also getting away from her own self. She was just Exactly. giving into the other. Exactly. It's so easy to get carried away. आजकल के ज़माने में तो हमारे पास इतनी distractions हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बह सकते हैं. तो बहना क्यों है? बह जाओगे तो कहाँ जाओगे? खुद को कैसे ढूंढ पाओगे? खुद को तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या हो. तो ढूंढो ना ऐसा जिसपे तुम रुक पाओ. We are always looking for something that we can hold on to, that we know will always be there. Isn't that the case? हम हमेशा एक constant ढूंढते हैं ना. So find that constant within yourself, and then you, I think, will also seek it outside of you. I remember one article I read on constants and variables. One of my friends had written कि ये लोग मेरी जिंदगी में constant है, बाकी सब all right. तो with respect to, I mean, not only just a partner, but also when it comes to finding a friend, let's say, because all relationships start from friendship. फ्रेंडशिप डे भी अभी गया है, अभी लास्ट 8 अगस्त को आई गेस गया है. तो कितने लोगों ने मनाया यहाँ पे फ्रेंडशिप डे? फ्रेंडशिप डे कितने लोगों ने मनाया? वो फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, हमें तो यादें अभी बनी हुई हैं. बस इतने से ही, दोस्तों के लिए कोई प्यार नहीं है. ओहो, सब बड़े हो गए हैं बच्चे, अभी ये फ्रेंडशिप डे बांधने बनाने का जमाना नहीं रह गया है. सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हेन वी आर चूजिंग अ फ्रेंड ऑल्सो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंपनी, संगति है. So what are the things that we should look in a friend or in a person कि अब तो आ जाइए, तो मेरा जिगरा है, जिगरी है, whatever. Ooh, okay. So I think it's all about the connect, right? दोस्त बोलते हैं ना कि you can get to know a person by the company he is surrounded with. So आपके दोस्त बहुत important होते हैं. यहाँ पे मुझे दो बहुत ही अच्छे दोस्त ऐसा लग रहा है मिल गए हैं. और यहाँ पे हम आश्रम में we refer to each other as brothers and sisters, right? So I think you first of all, find people that you resonate with. Again, find people जो आपकी खुशी में खुश होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जो आपके लिए खुश होंगे. नहीं होता ऐसा. बहुत अच्छी बात है अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता. पर सच्ची में अगर you're very lucky, then you are honestly blessed if you have good people around you. You have friends who are happy for you. और हम बोलते हैं कि यार दोस्तों के लिए तो दोस्त हमारे लिए खुश होने चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. इट्स वेरी इजी. मेरी खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. ये लाइन है बहुत ही. दोस्त का नंबर अच्छे आ जाते तो कैसे खुशी मिलेगी? वही तो, दोस्त के नंबर अच्छे आ गए. हाँ, क्या था? 3 Idiots का डायलॉग, उसमें ही कुछ था ना कि नंबर अच्छे आ गए तो कैसे मैं खुश हो जाऊँ. या दोस्त जब फेल हो जाता है तो दुख होता है, पर दोस्त जब पास हो जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है. और ज़्यादा दुख होता है. तो दैट इज ट्रू. ठीक है, हम थोड़े बहुत तो एक दूसरे से, मतलब आई एम नॉट सेइंग वी एनवी ईच अदर, बट देयर इज ऑलवेज दैट सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. सो फाइंड पीपल who can be happy for you, who will help you grow, who resonate with what your morals are, who don't feel the need to pressure you into doing things or being a certain way, जिनके अराउंड आप बस रह सकते हो, आप जैसे भी हो, you can just be. So I think that is what friends are for, no? Yeah, और Facebook पे friends तो नहीं होते ना, मतलब followers, आपके भी बहुत सारे fans हैं. Instagram पे कितने लोगों ने इनको follow कर रखा है? Yeah. So there can be many fans and followers, but I'm sure friendship is very different from. No, definitely. I can say that I know a lot of people, but actually आपको कौन जानता है? हमारी पहचान है एक दूसरे से, पर हम जानते नहीं हैं एक दूसरे को. So that find people जो आपको जान पाए, जिनको आप जानने दो खुद को, क्योंकि being that vulnerable with somebody is also taking a lot from you, right? So find people जिनके around you don't mind being vulnerable, you don't mind being yourself.
वेरी ट्रू. बट इस क्वेश्चन को मैं फ्लिप करती हूँ. एक है कि हम ढूंढ रहे हैं कि ये फ्रेंड मेरे लिए सूटेबल है, ये पार्टनर मेरे लिए सूटेबल है, वगैरह वगैरह. बट हाउ डू आई बिकम दैट सूटेबल फ्रेंड टू समवन? How do I become that suitable partner to someone? What is your take on that? I think it's constant practice, man. I think it's you constantly, every day, like I was saying, you have to decide that I'm going to do it. I am going to keep doing what I do. My friends, I have honestly been blessed with very, very good friends. I am not the bestest person there, but मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिल गए हैं मुझे. And they understand, like I am not there for them 24/7. हमेशा बोलते हैं ना कि friends should always be there for you. I'm not there for them physically 24/7. I don't reply to messages a lot of the times, but they know that I'm there whenever they would need me, and I know they are there with me, though I might not be talking to them for like days or weeks or whatever. But we don't need to communicate in order to be heard. That is something that I've learned from my friends कि आपको बात करने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ कह पाने के लिए, किसी के लिए सुन पाने के लिए. So I feel like I am still practicing that. I am trying to get better at it. I message my friends more often now. I call and check up on them. How are they doing? And I try and show up. So just do that. Just try and be better every day, every moment that you are, because that is all you can do. That is all that is in your control. Basically कहना चाहिए dress up and show up every day. Dress up and show up. Dress up and show up. Absolutely. Great. आज 2 दिन से हम kindness, rising with kindness festival मना रहे हैं. What's your take on kindness? Why is kindness so important in today's world? For oneself, for others, and for the surroundings, for the nation, for the environment. I would really want my, like, जहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, for them to answer. Why is kindness so important? Anybody, if anybody wants to answer. Being kind to each other, being kind to the environment. Why is it important? Why are we talking about this here? Anybody? कोई बात करना चाहेगा? एक mic pass करवा देंगे please. One mic if we can. It's okay. Hi. So I think kindness is important to make the world a better place, and I think I attended a session today and in which they were saying that we always think that we have to do big things and that we are not capable of doing those big things. We don't even do the small acts of kindness. So maybe the small acts of kindness we do every day can make someone happy. Someone who is having a bad day maybe can help them or make their day better. So maybe yes, that's why. Thank you. And it's lovely seeing you in person. You're very lovely. Sister, मैं session के बीच में हूँ. So yeah, like she said, why is it important to be kind? Because you don't know what the other person is going through, and you might just make their day, right? कितनी बारी ऐसा? My take on kindness. अरे come please. I think in this highly competitive world where we are only thinking about ourselves, being kind to someone can make their day. Being kind to oneself can make our day. And I think अभी जो वक्त चल रहा है ना कि we are only thinking कि constantly मुझे लाइफ में जीतना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है. अगर हम उस बंदे के लिए सोचेंगे, ठीक है, for the person who is sitting in front, हमारे लिए काइंडनेस अभी तक till the date, like till I have not come here, अभी तक मेरे लिए काइंडनेस ये थी कि I should give some money to somebody, थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ उसकी, ठीक है, that is kindness for me. But now I think kindness is a much bigger thing. It should come from inside and it should be given to everybody, irrespective of their caste, creed, place, financial issue, everything. You should be kind to every being, every human being, every organism. That's my. Very nice. Thank you. Absolutely, absolutely. आपको भी बोलना है? अच्छा, that's. I think that will be the last person. आप उनको एक mic दे देंगे? Thank you, camera team, for supporting. मैम काइंडनेस हेल्प करता है कि 2 पर्सन के साथ में बात करें तो लिसनिंग को एक अलग ही पार्ट में डिवाइड कर देता है कि
मान लो कि कोई पर्सन है जो काइंडली बात करता है, तो उसकी जो दूसरा जो पर्सन है उसको ध्यान से सुनेगा, तो एक लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा कि कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि कोई इमोशनलेस है, मतलब कि वो कुछ चाहता ही नहीं कुछ करने को, लेकिन काइंडली को दूसरे जना भी बात करेगा तो वो एक स्टेप तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अगर वो कुछ करे भी ना तो भी। दिस इज द पावर ऑफ काइंडनेस। Absolutely. When you give without wanting anything back is what kindness is about, right? जब आप देते हो बिना किसी चाह के कि आपको सामने से कुछ मिल सकता है या नहीं, that is what kindness is being about. I think we need to be kind to each other and to the environment, to the world that we live in, because सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये. We have a legacy to create here. We have future generations जो आने वाली हैं यार. उनके लिए हम कुछ छोड़ के ही नहीं जाएंगे क्या? हम क्या छोड़ देंगे कि we were so I went to tissue culture today. I don't know if you guys have been here. Please explore Kanha as much as you can. Humans are the only species that are growing at a rate that is beyond expectations, beyond what we can comprehend. Yet we were talking about trees. There were so many species that have gone extinct, जिनका हमें पता भी नहीं है. हमें उनके बारे में पता भी नहीं है. हमारी पहले की जनरेशन्स ने शायद कभी उनका महसूस किया होगा, उनके साथ रहे होंगे, उनके साथ एक्सपीरियंस किया होगा उन्हें, बट हमें उनके बारे में पता भी नहीं है. So if we keep going at this rate, what are we going to give the future? हम बस एक दूसरे से लड़ने में बिजी रहेंगे, एक दूसरे की नकल उतारने में बिजी रहेंगे, इन सब चीज़ों में हम अटके रहेंगे, all these superficial materialistic things. But what do we go back to? What is at the core of us? हम कौन हैं at the end of the day? Who are we? We are not mean people, we are not bad people, we are good people. It's just situations where we have to choose to be kind to one another, because it's very easy for me also to say no. मैं काफ़ी बारी photos के लिए भी मना कर देती हूँ, but then I have to think, yeah, it takes a lot for the other person to come up to me and ask for that picture. So I think of that, but you have to consider कि maybe why I am saying no is because I have my reasons, right? So think about one another, and when you do think about one another with that selflessness within you, it'll make things so much easier. I am sure I was talking to a brother here, and he was telling me about heartfulness communication and how it's about putting yourself in the other person's shoes. When you feel anger towards somebody, when you feel like you don't want to give something to somebody else, think about what they might be going through, and it will make the task a lot easier. I'm not saying it will be just easy peasy. You have to choose to be kind, you have to choose to give, you have to choose to do that every day. Absolutely. So एक है कि मैं बोल रही हूँ कि मैं तो काइंड हूँ, कंपैशनेट हूँ और ये मेरी वैल्यू है, बट दूसरा है कि मैं कितना प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, और आपने कुछ चीज़ें बताई भी कि किस किस तरीके से आप करती हैं. थोड़ा और इस चीज़ को बताइए कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में आप किस तरह से काइंडनेस को प्रैक्टिस करती हैं, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हैं. See, I think because I receive so much kindness, so much love from everybody around me, I don't have to make an effort. I feel like I'm so grateful, even if that one single picture is not going to do anything for me. But अगर किसी को खुशी मिलती है उस चीज़ से, I will do that. No, कि मेरे लिए तो, I mean, I am here because of you guys. It's because of your love that I'm here. So I need to take a moment to appreciate you guys as well, because you do that every day, every second when I'm walking around. You guys make me feel so special. So thank you for that. Thank you for your kindness. And apart from that, what else? I think just being present. मैं अगर आपकी बात सुन सकती हूँ, मैं अगर आपको समझ सकती हूँ, I will give you my time. I will give you whatever I have to offer. Because beyond that, मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. But in that moment, I'll be yours. आपको जो भी मुझसे बात करनी है, आपको जो भी कहना है, जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, मैं आपके लिए वहाँ पे हूँगी. Wow, that was great. तो present रहना, I think giving the gift of presence, what she pointed out, I think that's the biggest act of kindness which you can do for the other. क्योंकि उस समय आप actually में एक hollow and empty होके सामने वाले की बातों को सुन रहे होते हैं, and that's the biggest gift. So I think my questions are over, but I would, and we have like very few, maybe 2-3 questions we can take from the audience. तो mic pass कर सकते हैं.
बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे टाइम क्रंच की वजह से. Only 2 questions. 1 question. Okay. Okay. Tell me a question. So, hello Tanya ma'am. Hello. So, I have 2 questions. One, अच्छा ठीक है. एक short question. Who were the biggest influences in your life? And second question, in brief, your defining moment. बस. Sorry, what? Could you repeat that? Defining moment. A defining moment. Okay. So the biggest inspiration, influences in my life, I think, are my family. Definitely. My sister plays a very, very huge role in everything that I am, in everything that I do. My appa, my dad, matlab. My brothers, my... sorry, question nahi ho payega. But everything that I am, I think I owe it to my family, because they created an environment for me where I could succeed, where I didn't have to worry about anything going wrong, and I always had somebody to like fall back on. So I think my family has been my biggest inspiration, my biggest influence. Master is always there in everything that I do. So Master, and the defining moment for me, pata nahi yaar, I feel like every moment that I am living is a defining moment for me. अब मैं ऐसे एक को कैसे categorize कर दूँ? जिंदा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और क्या चाहिए? Thank you. All right, thank you. इसी के साथ मैं एक इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी with few lines I had written some days back. On kindness, हम बातें बहुत करते रहते हैं लोगों से. We talk a lot, but कभी-कभी अपने मैं शुरुआत से पढ़ूंगी इसे. अभिव्यक्त करना अच्छा है, यानी बातें करना अच्छा है, मगर कभी कभी किसी को अपने दिल की भावनाएं ना बताना, किसी को बस स्पेस दे देना, या उसे वो दे देना जो वो चाहता हो, किसी की ना में भी अपनी खुशी ढूंढ लेना, और किसी की खामोशी में अपने जवाब खुद से ही ले लेना, और भीतर ही भीतर दर्द की हद से इस कदर गुजर जाना कि वो दवा बन जाए और सामने वाले से कोई शिकायत ही ना बचे. प्रेम और करुणा यही होती है. Wow, wow. Thank you. So, thank you so much, Tanya. It was pleasure interacting with you. Thank you, Kritika. And I loved meeting you. मुझे नहीं पता था 2020 के बाद आज इस तरह से हम बातचीत कर पाएंगे. So now at 5:30 we have Ricky Cage performing at the dining hall of THLC. You can please proceed towards the dining hall with the... Thank you, everybody. Thank you for a lovely session. Thank you for being